Today we will understand the threats when we use the internet. Children, when we are using the internet, there is a chance that our computer can be harmed, our data can be lost. Sometimes it can be done by intentionally or sometimes it can be done by accidentally. And sometimes unauthorized person try to access the information like debit card details, PAN card details, passwords, ATM pin when we are working on the internet. So we have to take care of these threats when we are surfing over the internet. Malwares. Children, malwares are the malicious softwares like virus, worms, ransomwares, spywares. All these are known as a malwares because they are developed to just harm our computer system, to damage our computer system, to gain the unauthorized access to our computer network, to just डिस्ट्रॉय आवर इम्पॉर्टेंट डेटा, टू स्टील आवर इम्पॉर्टेंट डेटा. ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को हार्म करने के लिए, हमारे कंप्यूटर की वर्किंग को इफेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं या हमारे कंप्यूटर से इम्पॉर्टेंट डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए या स्टील करने के लिए बनाए जाते हैं. तो वी हैव टू बी just take care of such type of malicious softwares. Virus. Children, virus is a malicious software malware that secretly embedded on a computer system. It has a capability to spread itself. It can replicate itself and it is used to steal, corrupt and destroy our data. Trojan. Trojan is also a type of malicious software. When it embeds, it shows as it is a legitimate software and pretend to be a useful application. ट्रोजन्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे बहुत ही लीगल सॉफ्टवेयर है, यूजफुल सॉफ्टवेयर है, बट वंस it runs on our computer, it start to delete our important files, it start to just affect the working of computers. It records the logging keystrokes we are using, the keys that we are pressing. But Trojan cannot replicate themselves just like virus. Virus can replicate themselves, but Trojan cannot replicate themselves. Trojans are also malicious software. Worms. Children, worms are just like virus. They also attack our computer system, but they don't need other programs or files to spread. They can spread themselves. They can just store in our computer's memory and propagates by sending itself to other computers in a network. worms जो होते हैं वो खुद को स्प्रेड कर सकते हैं. वायरस जो होते हैं वो किसी दूसरे प्रोग्राम या फाइल की हेल्प से रेप्लिकेट होते हैं. And children, worms consume system's memory, slow down the speed of computer and network. So worms are also malicious software. Keyloggers. Children, keylogger is a program that record the keystrokes user use. जो भी की हम प्रेस करते हैं की लॉगर सॉफ्टवेयर उसको नोट करते रहते हैं एंड ट्राई टू जस्ट गेट द सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस and personal information, financial information, just like password. Cookies. Children, cookies is a message that is sent by server to the web browser. Whenever we use browsers and visit any website, the server computer send message to the web browser that is known as a cookies. जब भी हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं ब्राउज़र में तो जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं जहाँ से वेबसाइट वेब पेजेस सेंड होते हैं वहाँ से एक टेक्स्ट मैसेज हमारे कंप्यूटर के ब्राउज़र को सेंड होता है दैट इज़ नोन एज ए कुकीज़ एंड ब्राउज़र यूज़ these information to customize our web page, and that is the reason once we fill up the information, next time if we visit on that website some information are already filled by the browser. इसीलिए जब भी हम कभी कोई वेबसाइट पे विजिट करते हैं जस्ट लाइक ऑनलाइन पेमेंट तो हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड होती है बिकॉज वेब ब्राउज़र यूज़ द कुकीज़. सो दीज कुकीज़ आर
just safe. But if unauthorized person can just access the cookies, they can misuse, they can just access our sensitive information. So it is important that we should time to time delete these cookies. Spyware. Children, spyware is a software that secretly collects our information. When we visit the web pages, हम कौन से वेब पेजेस पे जा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, हमारे ईमेल के एड्रेसेस और पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, इनको एक्सेस करता है. एंड स्पाईवेयर्स आर यूज बाय द पर्सन्स फॉर इलीगल पर्पस. So we should take care while we are visiting on the web page. Spamming. Spamming means unwanted messages, undesirable advertisement that comes to our mail account. Because children's spams are also very dangerous, and because such type of spam contains the virus, trojans, worms, spywares to steal the sensitive information to affect our computer system. So we should not open such type of spam messages. We should just delete them if we don't know that the message is coming from an authorized person or unauthorized person. Scareware. Children, scareware is also a malicious software that pop-ups the information to the user that your computer system is affected. Just pay the fee to clean it. स्केयरवेयर हमको स्केयर करते रहते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा, आपका इंपॉर्टेंट डेटा लॉस हो जाएगा, आप जो है इसको पेड करिए तो आपका कंप्यूटर से वायरस या मैलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूव हो जाएंगे. And ransomware is just same type of malicious software that give us the fraudulent warnings that your system can be infected, you have to pay the money, they demand the money. वो हमसे डिमांड करते हैं कि नहीं तो आपका कंप्यूटर का डेटा लॉस हो जाएगा. सो सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर just demanding money to secure our computer system. So we should take care of all such type of softwares when we are working over the internet. We should not open unauthorized websites. We should not visit. We should not click the links that are coming to our browser window. Thank you.